So majorly sometimes you will get that string into in the form of string names. ठीक है, अब ये नेम्स आ रहे हैं मेजरली, हमें आप स्ट्रिंग टोकनाइजर और स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट की बात कर रहे हैं. तो लेट्स से जेम्स, राइट, हियर रॉय, मे बी अमित, maybe Rajesh. Like this, you can have n. But you need that, you need to validate these names, and you need to store into and you need to process each and every element separately. So you can use, rather than, there is a two ways. You can use a string tokenizer, or you can also use a string dot split. So basically, Spring is already providing split method. So nobody using a what we can call as something we can call, you can specify on which basis you wanted to. So here, this is a comma separated. You can use a comma separated. This split is basically a string names like this. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, राइट. इसमें ये सारे नेम्स स्टोर होंगे. अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 0 1 2 3, like this. So you can use a like this. ठीक है, what you are doing it here. So if I will say system dot out dot println, right, और यहाँ पर you can just come and say names dot length. ठीक है, प्लस डॉट लेंथ. ठीक है, तो अभी एरे का लेंथ मिल जाएगा. और इफ यू वांटेड टू टेक इट अप एज अ सिंगल एलिमेंट्स, सो व्हाट यू नीड टू डू, so what you will do here, we will basically come here, plus here we will say names. Here let's say first element. तो first element क्या होगा यहाँ पर? Roy. So what we are doing it, run as Java application. तो अब हमने क्या किया है कि you will see the name Roy. ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और लेंथ में भी तुम्हें स्पेस दूंगा, तो यू विल गेट इट कि एक्चुअली स्प्लिट करना है तो कैसे करना है. ठीक है, अब देखो उसकी जो लेंथ है 4 है, जो मैंने तुम्हें बताया. यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रॉय है. यहाँ पर लेट से कि तुम्हारे पास में कुछ अलग टाइप का कुछ है, मे बी हैश. ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैश. सो व्हाट विल हैपन हियर, यू कैन आल्सो ट्राई एंड चेक कि अब कितने एलिमेंट होंगे, राइट. सो यू विल सी लेंथ इज 3. So 0, it will consider as a 1, and 2 and 3 like this. ठीक है, so इस तरीके से you can use that any kind of an expression here, and then separator basically what we can call. If you don't specify any separator also in that scenario, it will be considered as a space. ठीक है, तो ये दो स्पेस मैंने ले लिए हैं और मैं यहाँ पर ये भी रिमूव कर दे रहा हूँ स्पेस. अब कितने एलिमेंट होंगे? स्टिल इट विल बी अ the length of this names will be 3. ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है रॉय एंड अमित हो गया है, क्योंकि दिस विल कंसीडर एज अ वन एलिमेंट. सो इस तरीके से यू कैन यूज अ डिफरेंट टोकनाइजर. यू डोंट नीड टू यूज इट बिकॉज नाउ split method is much more sufficient to provide all this kind of an implementation and support for that. ठीक है, like this. So this is, you can also use it and you can check it out. Now we will discuss into a next session. Here basically majorly regex expressions, and if you wanted to comma separated payment files are coming here. If you wanted to process, how you will do it, something like that. These kind of scenarios you need to split and unit, and many more places you will use it. Maybe you are getting it into a JSON format data, or if you are getting is a single string all this data, you need to trim, and you need to basically create an object from it, from the string. Then you need to use this kind of a option here.
correct. And there are many such other questions you will see for an interview as well. So